so that others can also get benefited. Anmol has joined actually. Yes, So Anmol and Surendra has Surendra joined. Singh are the two, right? Yeah. Maybe we can start, Anurag. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक Sure. जस्ट 2-3 स्लाइड का एक जस्ट पीपीटी है वो मैं शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम सीधे चार्ट पे आ Perfect. जाएंगे। Perfect. Yeah, try English only so that other people can also benefit it, All like, right, all right, all right. who knows. Okay, sure. Yeah. Just let me know whether the screen is visible or not. Yeah, it is Yes, we visible. can see your PPT now. Okay, so this is the standard disclaimer. I mean, this session is on the smart money concept, and it is strictly for the academic purpose only. And the content here are my personal understanding about the market, my personal experiences about the market, the way I have interpreted the market. So it is not a recommendation, it is not a financial advice, and it is neither a buy or sell recommendation. So if you are taking any trade based upon this, then you have to first consult a SEBI registered financial advisor before making any trading investment or decisions. And if you are attending the session, you acknowledge that you are solely responsible for your trading decisions. The presenter shall not be liable for any financial losses incurred based upon the concepts discussed, and trade responsibly. Risk only what you can afford to lose. So with this disclaimer, let's begin this session. I'll first ask a question to the group. Anybody can respond. What do you see in this? This is a picture. What do you see in this? One tiger and many prey. One tiger and many Trees. trees. The And hunt the for tiger is trees. also trying to hunt the deer. Can you see the deer? Yeah. So this is basically the market. When there is a big player is a tiger, and he tries to hunt players like us, the small players like us, and we are essentially the deer. And along with the deer and tiger in the jungle, there is also one participant, and he is jackal. So what does jackal do? He feeds upon the prey which is hunted by a big player. So this is how the smart money concept is built. The smart money, in the parallels of the smart money, the big institution is the one who hunts the deer or the weak retailers, and the weak retailers are the one who gets hunted, and then there are smart retailers who follow the footprints of the big institutions and try to take the trades and ensure that they don't get hunted, and in fact they get benefited out of the by tracking the footprints of the big institution. So with this explanation, let's move on to chart. I'll share my chart screen. Yes, is this invisible chart? Yes, your trading view is indicate like clear to us now. We can see that. Okay, it's visible. Okay. So first I'll explain the concept, and then we will see examples on the chart, and we'll see how the trade is taken. So for explaining the concept, I'm just hiding the candles here. Cause of the height. Yes. Yes. So what do you understand by an uptrend? A classical copybook style uptrend. What do we understand by it? So there is an up move, there's a pullback, then there is an up move, pullback, up move, pullback, and this is how we get taught in the trading classes and books. This is how a classical uptrend looks like. But is it really so? Has anybody seen an uptrend like this?
There is always noise into it. You're right. Agreed. There's always a noise into it, and this is if this is an uptrend, then actually the retailers don't get trapped. So the whole concept of smart money is that trapping the retailers. If there is a copybook style uptrend, there's a clear higher low, then higher high, then higher low gets defended, high gets broken, high low gets defended, high gets broken. In this kind of a scenario, the retailers won't get trapped. So if the smart money needs to make money, he needs to trap the retailers. So what he will do, he will place the orders in at such a point where he knows that most of the retailers will be willingly selling their positions. Suppose this is a Reliance stock. I'm just giving an example of a Reliance stock. And the smart player is, I mean, the big institution, he is bullish on Reliance. And the price is trading here, and still he is bullish, so he will not take the positions here, because if he takes here, then point number one, he is buying at a very high price. Point number two, there are not very willing participants who are ready to exchange their Reliance shares to this big player. But this big players knows that this is one point where if the price goes here, I mean, if the price takes a pullback and this time the low does not gets defended, see, the price comes here, then he knows that there will be a lot of people who have bought the Reliance share in this leg, and they might have kept the stop losses here. So this is the point where the smart players know that there is a lot of liquidity present over here. There, when the if the price reaches there, there will be a lot of retailers whose stop loss will get hit, and buy stop loss order is essentially a sell order, and this is a in this sell order, the big player will start buying, accumulating the Reliance share. Second point is that when the price moves over here, there will be a lot of willing sellers, short sellers who will think, okay, this has broken a crucial level. Now the stock will go down. This might be the view of a lot of retailers who are willing to short it here. So the big players will also get the liquidity of those willing short sellers here. So he knows that this is one probable point where there will be a lot of liquidity. So he will enter somewhere here, and once the entire liquidity gets taken out, the price of Reliance will boom. The real up move will start here, and everybody will regret, and everybody will say, "यार मेरा ही stop loss लगता है." So this is the concept of smart money. This is how the smart money works every time uh, in the market. So our duty is that, and obviously the smart money will not tell us that we are going to enter, but they cannot even hide, because they cannot hide their activities from the market. So there are some footprints that they leave whenever they take some kind of positions in the market. So a smart money concept is a theory that talks about reading the activities or the footprints of the big players. Now I will start. Yeah, Anurag, are you taking any questions now, or you want to just go through this No, thing? no, no. You can ask the question midway as well. Okay. So when you said that, that the smart money would be putting all their orders from where people feel that, if it crosses that support level, then probably it's going down and they'll have a lot of liquidity there, right? But what is pushing the market to go down from that point to the liquidity level? If there is an uptrend in the market, right? Why would it even pull back to begin with? Because the So smart there, money orders can never get fulfilled as well, right? If the market is on uptrend and they have a order which is much below. yeah, the reason behind this is that market responds with two different paces at two different levels. When there are crucial levels,
there is a lot of liquidity, and that liquidity actually punches the market either up or down. But when there is not much, suppose say I'll just give you an example of any stock you can take, say Nifty only. So when Nifty is at 26,000, or say when near a very crucial support level, then at that point of time, there are a lot of participants who are interested in either making a buy decision or a sell decision. But if Nifty is at, at any level, say 24,600, which is not at that much crucial level, then at that point of time, market does not have any enough liquidity either to go up or to go down. So it will just move in a range bound, and it will try, some days it will move up, then it will come down, and it will always search for liquidity, and slowly it will come either to that up level where there will be enough liquidity, or it will come down to that level where there will be enough liquidity. Once it reaches that level, then only the real trend starts. So basically, liquidity will be from both sides, buy and sell, because some people trade, a breakout. So when it goes up, people will start buying, and some people trade reversal. So when it reaches crucial level, then they will try to sell, right? So you Yes, mean to say something like that, right? yes. Liquidity will be at both the levels, but the market will not respond every time with the same pace. At some level, the market will move very fast when the enough liquidity has been grabbed in. Then the market moves very fast. But when there is a lot of liquidity still present, then the market moves very slow, because it needs to absorb all the orders which are pending at that point of time. Yeah. And Anurag, I mean, correct me if I'm wrong, but these institutions, they can also engineer that liquidity, right? By selling at that high level and giving that false signal to the market, right? Saying that, okay, the pattern is broken, basically the higher high, lower low pattern is broken. And Yeah, that's yeah, how, yeah, then yeah, there will be panic selling and they get to the level where they want the market, right? yeah. That also happens, and that is, there is a concept of external liquidity and internal liquidity. What you are talking about is internal liquidity. Let me just go through the concept first, and I'll explain everything, because these are some related concepts that we need to cover. So, first of all, I'll just explain the rules. The first rule is that at any point of time, if we are tracking the charts at any time frame, we ignore all the inside candles. This is the first rule. For example, I'll just show the chart. So today was a very classic example. Can you add volume profile also for today's chart? Volume profile. Yes, daily volume profile. But Anchal, let him finish first what he wants to show, right? Sure. We will be able Yeah. to ask him the questions at the later end. Sure. See, this is the, I'm just इसको पहले 5 मिनट पे कर लेते हैं. चलो 3 मिनट में दिखा देते हैं. हाँ, this is the first candle. ठीक है, this is the first 3 minute candle, and after that, see, all the candles were getting formed within this first 3 minute candle. So all these candles which are getting formed inside this candle, these candles will be of no use when we are trying to track the activities from the point of view of SMC. This is the second candle, which is of importance because it has broken the liquidity. The high of the first candle. See, this is the first rule. And second is the, I'll just tell you the definition of a swing. For say when the price moves
in this direction, then these are the swings. So this is the swing, this is the swing, this is also a swing. So how do we define the swing? The definition of the swing is that in any three consecutive candles, if the middle candle high is the highest among all the three candles, then that is a swing. For example, this is one candle, this is two candle, this candle is inside, so we'll not consider. This is the third candle, 1 2 3. So this, its high is higher than the high of this candle, its high is also higher than the high of this candle, so this will be considered as a swing, right? Right. Similarly, like this candle, this is also a swing. This candle is inside, is this is first candle, this is second candle, and this is third candle. So first, second, and third. So the low of this candle is high, is lower than this candle, and the low of this candle is also lower than this candle. So this will be also considered as a swing. Okay, these are the mirror two rules of smart money concept. Now we will understand how the market structure works in any smart money thing. Just hide this. So the rule is that whenever the market is moving in a trend, at any point of time, if this is the highest point of the market, then we have to look for the immediate swing which is on the left side of the highest point. So at this point of time, this is the highest point. So this is the leftmost part. I mean this is the most recent swing at the leftmost part. So this part will be termed as an inducement. This will be inducement. Okay. And when the market comes down to collect the liquidity of this inducement, then only we'll say that this high is confirmed. Before this, we will not say, because we never know ना. अब जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ये उस समय जब मार्केट यहाँ पे ऊपर था तो इंड्यूसमेंट ये चल रहा था, दिस वाज द लेफ्ट मोस्ट, दिस वाज द स्विंग ऑफ द रीसेंट लेफ्ट पार्ट, बट मार्केट ने इसको कलेक्ट नहीं किया, सो मार्केट और ऊपर चला गया. सो वी नेवर नो ना मार्केट कितना ऊपर जाता जाएगा. when when this inducement is taken, then only we'll say that this is a confirmed high. Once this high is confirmed, say we'll say this is higher high. Okay. And once this higher high gets taken, when this high is confirmed and this higher high gets taken, then only we'll say that there is a break of structure. At this point of time, when the closing comes above this part, this higher high part, then we'll say that yeah, this market has broken out from its previous level and it is now moving for a new level. So at this point of time, we'll say this is the break of structure. I'll say BOS, bullish. This is bullish BOS. And once this break of structure happens, then the lowest part between this higher high and the new area from where the market has broken its structure, this becomes the new low.
This is the low. It becomes the new low. It is called higher low. This is called higher low. Okay. And now, if the market reverses till the point market does not takes out this low part, we will not say that the market has turned bearish. Only when the this low gets taken out, we'll say that there is a change of character in the market. Market has turned from bullish to bearish. Unless the market keeps on moving above this level, we'll never say that the market is bearish. We'll say market is in bullish structure. अगर मान लो प्राइस ऐसे आता है, ऐसे जाता है ना, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसा लगेगा कि मार्केट फॉल हो रहा है, बट द मार्केट इन दिस टाइम फ्रेम is not falling. It's still bullish because this is still defended. Once this gets broken out, we'll say that the market has become bearish. Now इसके एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ. This is an indicator that I use for marking the structures. And Anurag, one question. Should we make a note of this indicator, or you will be sharing the template for us? I'll share the script for the indicator, and you can Thank just copy it on your trading view. Thank you. इसमें पता नहीं यार, मैं दूसरी चार्ट पे जा रहा हूँ, वहां पे इसमें कुछ टाइम फ्रेम का इशू हो रहा है. अच्छा, ये यहाँ पे हाइड हो रहा है. ठीक है, पहले इसको डेली पे देखते हैं. सी कोई भी पॉइंट पकड़ लो, से दिस वाज द हाईएस्ट पॉइंट, राइट? सो वंस द मार्केट, अभी सिर्फ यहां तक था मार्केट. At this point of time, the most recent swing at the left part was this. So this was an inducement, right? So जब तक ये inducement को नहीं लेगा, हम नहीं बोलेंगे कि ये हाई कंफर्म हो गया है, जब तक ये नहीं लेगा. अब हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं. सी यहाँ पे लिया, अब ये हाई कंफर्म हो गया बिकॉज इट हैज टेकन दिस इंड्यूसमेंट. ठीक है, वंस दिस हाई गेट्स कंफर्म, अब अगर ये इस हाई को लेगा वापस, तब हम बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है. और यहाँ पे जब इसने यहाँ पे लिया था तो हायर लो ये चल रहा था, दिस वाज द हायर लो. अगर क्लोजिंग ये इसके नीचे आ जाती, इसके नीचे, तो वी वुड हैव सेड दैट मार्केट हैज चेंज्ड इट्स कैरेक्टर फ्रॉम बुलिश टू बियरिश. बट ये जो ये क्लोजिंग थी, इसके नीचे नहीं आई. देखिए, ये क्लोजिंग थी, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे नहीं आई, इसके नीचे नहीं आई, और यहाँ पे आई है. दिस इज अनदर रूल. अगेन दिस इज अ वेरी डिटेल कॉन्सेप्ट, सो थिंग्स कैन नॉट बी कवर्ड इन अ वेरी इन अ वेरी शॉर्ट सेशन. यहाँ पे इसकी क्लोजिंग नीचे नहीं आई थी, बट अब हम इसका जो लो है वो ये लेंगे, क्योंकि इसका ये लो के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक ये मार्केट बुलिश रहेगा. ये वाला पॉइंट समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो फिर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं. And Andhra, what is the size of this candle? In minutes, few minutes. It's daily candle. Daily candle. So, I mean, will it matter? Will it depend on what kind of trader we are? So we are intraday trader, then we should be looking at more granular candles.
it does matter. It depends upon what time frame that you're trading, whether you are scalping or not. I'll also cover that in the later part, and I'll also show you some intraday trades which have been taken on the basis of this concept. So Anurag, what is the time frame do you recommend we should use to really capture this smart money concept, right? See, I Like you use initially said 3 minutes. Yeah. my trading style is that I take two time frames. First one is that the higher time frame on the basis of which I form my bias, and there is a lower time frame which is almost 5 times lower than my higher time frame. For example, if my 5 minute trade says take a bullet trade, 5 minute time frame says take a bullish trade, then I'll shift my time frame to 1 minute, and will try to find bullish opportunity in 1 minute for taking the trade. So I take Oh, two time frames. I'll show you some trading style, my trading style also. It will be able to, I mean, you will be able to make more sense out of it then. okay. Thanks. यहाँ पे it has closed above the previous high, so then there is a breakout structure, and when the breakout structure happens, then this will be the new high part. So यहाँ इस वाले हाई से जो लेफ्ट का पहला स्विंग होगा, दिस विल बी द इंड्यूसमेंट. कहाँ हो गया यार? हाँ, ये वाला पार्ट इंड्यूसमेंट होगा, ये इंड्यूसमेंट होगा. अब जब तक मार्केट इसको नहीं लेगा तब तक ये हाई कंफर्म नहीं होगा. लेट्स सी. अब इस हाई के भी ऊपर एक हाई आ गया, ठीक है, तो ये वाले हाई का लेफ्ट पार्ट का स्विंग जो होगा, लेफ्ट का रिसेंट स्विंग, ये इंड्यूसमेंट बन जाएगा. अब जब मार्केट इसको लेगा तब ये हाई कंफर्म होगा. सो अभी तक हुआ नहीं है ये. अब मार्केट इंड्यूसमेंट के बहुत करीब आ गया है. नाउ I'll show you इसमें how the trading happens. To track the activities of any smart money concept, उनके ना कुछ फुटप्रिंट्स होते हैं. वो फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? Whenever a big player wants to enter, for example there is a swimming pool. तो स्विमिंग पूल में अगर कोई छोटा बच्चा कूदेगा तो विल द वाटर डिस्प्लेस, बहुत बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर डिस्प्लेस करेगा. बट इफ इमेजिन एन एलिफेंट जंप्स इनटू दैट पूल, so the water will splash like anything. So this is what happens in the market as well. Whenever the big player tries to make the positions, then the price moves a lot. I mean, there is a significant move in the price, and that can be tracked. So that activity is called a fair value gap. फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है कि whenever कोई भी तीन consecutive candles होती हैं, ideally when the price are moving in a tight range, or when the market is very efficient, then ideally in any three consecutive candles there will be at least one area जहाँ पे वो तीनों कैंडल में वो प्राइस आया होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द, ये थ्री consecutive कैंडल्स लेते हैं, तो ये एक एरिया था, ये एक एरिया था, ये जो ये कॉमन एरिया है, ये वाला एरिया, इस कैंडल ने भी इस प्राइस को छुआ है, इसने भी छुआ है, इसने भी छुआ है. तो दिस इज व्हेन द एफिशिएंट मार्केट मूव्स इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर. बट जब बड़ा प्लेयर एंटर करता है ना, तो फॉर अ मोमेंट देन देयर इज अ सडन राइज और ड्रॉप इन द प्राइसेस. सो उस टाइम पे वो तीन कॉन्जिक्यूटिव कैंडल में एक एरिया ऐसा बन जाता है जिसमें वो प्राइस तीनों के तीनों कैंडल ने नहीं छुआ होगा. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यहाँ पे प्राइस मूव किया है, तो ये कैंडल और ये कैंडल में अगर हम देखेंगे,
ये एरिया था, इस एरिया को फर्स्ट कैंडल ने नहीं छुआ और इस एरिया को थर्ड कैंडल ने नहीं छुआ। दिस इज 1 2 एंड 3 कैंडल्स। सो ये जो एरिया होगा दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। सो ये हमें इंडिकेट करता है कि देयर माइट बी द प्रेजेंस ऑफ a big player in this area where he has made some, you know he has taken some trades or entered into the market। ठीक है, और जहां पे भी फेयर वैल्यू गैप होगा उसके पास में रिसेंट अगर स्विंग होता है दैट इज कॉल्ड एन ऑर्डर ब्लॉक। लाइक ये जो फेयर वैल्यू गैप था इसके पास में ये एक स्विंग था। स्विंग का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जो भी 3 कैंडल कॉन्जिक्यूटिव होंगी इनसाइड कैंडल छोड़ देनी है। अगर लोएस्ट पर लोएस्ट लो बना रहा है दैट इज कॉल्ड ये a swing। So this was an order block in this। ठीक है, अभी ट्रेड लेने के इसमें 3 स्टाइल होते हैं। एक होता है कि we know the market is in a bullish structure, so we'll be obviously, अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम बुलिश है, हायर टाइम फ्रेम डेली का अगर हम देख रहे हैं, if it is a bullish so we'll only take the bullish trades। point number 1। point number 2 is that there are 3 areas from where we can take the trades। एक तो एरिया होता है कि अगर इंड्यूसमेंट को जस्ट उसने स्वीप किया और फिर से वापस ऊपर आ गया, लाइक दिस हैज हैपेंड टुडे ओनली। नहीं, अभी इंड्यूसमेंट स्वीप नहीं हुआ है, थोड़ा सा रह गया शायद। इसका लो है 857.50 एंड इसका 856.20 है। हाँ, अभी थोड़ा सा रह गया है, बट इमेजिन ये अगर इसको स्वीप हो गया होता, या फिर पहले का कोई एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, लाइक दिस वाज द इंड्यूसमेंट एंड ये इंड्यूसमेंट स्वीप हो गया और स्वीप होने के बाद वापस क्लोजिंग ऊपर आ गई। सो यहाँ पे हम एक बुलिश ट्रेड लेते हैं इस जगह पे। ठीक है, एक एक ये स्टाइल होता है। दूसरा होता है कि अगर ये इंड्यूसमेंट स्वीप नहीं हुआ, क्लोजिंग नीचे आ गई, तो हम ढूंढेंगे कि वहां के आसपास में कोई ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है जिस जगह पे प्राइस चल रहा है। और तीसरा स्टाइल होता है कि एकदम लास्ट में जहाँ पे लोअर लो होता है, ठीक है, जिसके नीचे में प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लेगा, वहां के आसपास के ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड लेते हैं। अब ये वाली ट्रेड को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, इसको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, मैं कैसे लेता हूँ। से दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे इंड्यूसमेंट में स्वीप मिल गया। ठीक है, तो आई जस्ट मार्क दिस एरिया, आई मार्क दिस एरिया and I will shift to a lower time frame which shall be at least 5 times lower than the original time frame। then I'll shift to 75 minutes। डेली का है तो डेली के उस पर हम 75 मिनट पे शिफ्ट कर जाते हैं। अब हम इसी उसी एरिया पे आते हैं। ये क्या था, 22 मई था शायद। यस, ये एरिया था। ठीक है, सो जब भी प्राइस बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, एंड दिस इज द इंड्यूसमेंट, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ होगा, ये लेफ्ट साइड का पहला स्विंग है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे ये आपको बियरिश दिख रहा होगा। ये जो ये लेग है ना, ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ऐसा दिख रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, तो आपको लगेगा दिस इज बियरिश ट्रेड, बियरिश लेग है। तो उस बियरिश अपॉर्चुनिटी में ना आपको एक बुलिश ट्रेड लेना होता है। तो दिस इज अ रिवर्सल सेटअप। अब इसको एग्जांपल के थ्रू इसमें बताता हूँ आपको।
सो दिस इज 75 मिनट्स, और 75 मिनट में भी ये एक्चुअली ये बुलिश ही लग रहा है, तो हम और शिफ्ट कर जाएंगे, और भी नीचे वाले टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर जाएंगे, सिर्फ 15 मिनट पे चले जाएंगे, जिसमें हमें बियरिश मिलने लगे, क्योंकि हमारा अपर बायस हायर टाइम फ्रेम का बायस बुलिश है, तो उसके अपोजिट हमें स्ट्रक्चर दिखने लगे, तो उस पे हम चले जाएंगे। तो अगेन आई विल गो टू दिस 20 सेकेंड में, यस। तो इसमें ये बियरिश हो गया ये एरिया पे, तो ये 20 सेकेंड में को यहाँ पे तो हमें पता चला, यहाँ पे तो कैंडल क्लोज हुई थी, तो हमें पता चलेगा इस जगह पे कि ये कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी बना है, यानी इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब अब इसमें आप ट्रेड लोगे जब मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे बियरिश चल रहा है, और जब बियरिश से बुलिश हो जाएगा, तो उस बुलिश अपॉर्चुनिटी में एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा, उस गैप पे आपको ट्रेड लेना है। अब ये गैप कहाँ पे क्रिएट हुआ, से दिस वाज द लेग्स, मार्केट वाज गोइंग डाउन, ऐसे करके डाउन जा रहा था, ठीक है। बुलिश में चेंज होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए उसने यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट के साथ उसने एक फेयर वैल्यू गैप दिया इस जगह पे, दिस एंड दिस। अभी मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, कंफ्यूज हो गए। तो कैन यू सी, दिस इज फर्स्ट कैंडल, दिस इज सेकेंड कैंडल, एंड ये इनसाइड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के बीच में एक गैप है थोड़ा सा। कैन एवरीबडी सी दिस गैप? दिस इज फर्स्ट कैंडल, दिस इज सेकेंड कैंडल, एंड दिस इज द थर्ड कैंडल, सो ये गैप है, ठीक है। अब वापस जब इस प्राइस आएगा इस गैप में, विल टेक एन एंट्री, एंड अवर स्टॉप लॉस विल बी दिस लोअर लो। सी प्राइस यहाँ पे, यहाँ से चला गया, उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं पे आया, यहाँ पे हमारी ट्रेड इसके ऊपर वाले पॉइंट पे बन जाएगी, और हम लॉन्ग पोजीशन बना। हेलो, एंड आई नॉर्मली टारगेट 1:2, और 1:1.5 पे मैं पार्शियल बुक कर लेता हूँ, उसके बाद अगर मेरे को वो होता है तो मैं ट्रेल करता हूँ, और ट्रेल भी करता हूँ तो मैं पिछले जो भी स्विंग होते हैं, यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे स्विंग है, उनके ऊपर मैं अपनी वो टारगेट पोजिशंस को बुक करता ही जाता हूँ। बट ये ट्रेड तो बहुत लंबी गई है एनीवे, ये तो बहुत ऊपर गया है, आपको 1:4 तक दिया है। So this is how the trades are taken, by mixing the two time frames, by taking a bias, major bias from the higher time frame, and then you shift to a lower time frame and try to find trading opportunities in this. अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब इंटरडे के पर्पस के लिए ट्रेड्स के एग्जांपल मैं बता देता हूँ। 5 मिनट पे बना था एक अपॉर्चुनिटी। लाइक इन दिस केस, दिस अ बियरिश, ये तो इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट के वापस नीचे क्लोजिंग आ गई, राइट। तो अब आप इसको मार्क कर लोगे, ये एरिया को, ये 5 मिनट पे है, ठीक है ना, इस एरिया को मार्क कर लोगे, यहाँ को, एंड देन यू शिफ्ट टू 1 मिनट,
एंड 1 मिनट पे यू विल ट्राई टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी। ये टाइम नोट कर लेते हैं। 24 नवंबर को 12:50 पे आया था। 24 नवंबर को 12:50 पे आया था। हाँ, यहाँ पे ठीक है ना। तो हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे बायस वाज और बियरिश। तो हमें ढूंढना है कि 1 मिनट पे मार्केट बुलिश में चल रहा हो। तो मार्केट बुलिश में गया, इसने ये एक स्विंग बनाया, ठीक है ना। तो जब ये इसने ये एक स्विंग बनाया यहाँ पे, ये एक स्विंग बनाया और ये इस स्विंग को तोड़ा, तो मार्केट यहाँ पे बुलिश में था छोटे टाइम फ्रेम पे। उस टाइम पे ये जो हाईएस्ट पॉइंट था, इसके लेफ्ट साइड का पहला स्विंग जो था, ये इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। अब जब ये इंड्यूसमेंट को उसने एक बहुत ही ज्यादा इससे तोड़ा, एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल से तोड़ा, जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये ये ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, फेयर वैल्यू गैप बना। फिर वापस जब ये वापस आया, तो हमने इस फेयर वैल्यू गैप के एंट्री पे ही अपना ये लगा दिया, ऑर्डर लगा दिया, लिमिट में ऑर्डर लगा दिया। एंड द गुड थिंग इज दैट इसमें आपको टाइम मिलता है ये सब ट्रेड एग्जीक्यूट करने को, बिकॉज यू वेरी वेल नो कि ये टूट गया है, तो आपको ये लेवल पहले से पता है, ये लेवल पे आप अपना ऑर्डर लगा दोगे। एंड यू विल टेक एन एस एल, ये जो हाईएस्ट पॉइंट चल रहा है यहाँ पे, लोअर हाई, इसको आप एस एल रख दोगे, इसे थोड़ा सा ऊपर। एंड सी 1:2 मिला है। So this is how trades are executed by mixing the two time frames in smart money concept. Is there any question? Hey, So Anurag, Anurag, so this indicator which you are using structure, does this also mark fair value gaps or that you have to identify yourself? नहीं, fair value gap that I have to identify myself, because उसमें fair value gap में concept उसका भी रहता है, inside candles and वगैरह का, तो उसको ignore करना पड़ता है, तो indicator is not able to do this. बट द की थिंग इज दैट आपको वो सब देखना नहीं है इसमें। फेयर वैल्यू गैप आपको तभी देखना है व्हेन एवर देयर इज एन इंड्यूसमेंट का स्वीपिंग आता है, तभी देखना है। उसी के आसपास आपको ढूंढना चालू करना है कि फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है। नहीं तो बहुत सारे बनते रहते हैं, फेयर वैल्यू गैप बहुत सारे बनते हैं, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। बट इंपॉर्टेंट एरिया वही होता है जो इंड्यूसमेंट के पास में बनता है। if there is if it is forming near inducement, or you know द लोअर लो के आसपास वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां पे बनता है, देन ओनली इट इज ऑफ की इंपॉर्टेंस, अदरवाइज वी हैव टू इग्नोर अदर फेयर वैल्यू गैप्स। Understood. Okay. Anurag, so since अभी ये concept सबको पता है ना, like everybody knows about these concepts and everybody has the same chart and they know which is the higher high where stop loss will be there, right? So what is your observation, right, when you do this trades? Is it that, sometimes the manipulation happens where your stop loss gets hit and then it goes to your profit zone, right? How do you manage those situations? Because this is like concept is known, the indicators show you, and probably everybody would be placing their trade stop loss near to the same zone. See, I don't try to manage, because for that I have already kept my SL. I know there would be some fake trades that would be given by this concept. For that reason I only keep my SL. अगर मेरे को पता ही है कि मेरा सारा हिट होगा, ट्रेड मतलब प्रॉफिटेबल होगा, तो आई वोंट इवन कीप माय एसएल ना। नहीं नहीं, वो ठीक है, but are you keeping your SL few points above where we नहीं feel that नहीं it should be? नहीं, नो 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 नो, I don't keep my SL few points above, reason being that
कि मैं all the things that I track is based upon the spot chart, and I take trades on the options. That too, I do option selling. So if the market even goes beyond my SL, then in most cases my SL in option doesn't come because there is some decay in the premiums. Okay. So you always keep it your stop loss at the same level as you just shown us. हाँ, एट द सेम लेवल, जस्ट एक दो पॉइंट ऊपर कर लूंगा, बट उससे ज्यादा नहीं करता. एंड आई टेक ऑल माई एसेट्स ग्रेशियसली. Uh-huh. Okay. एंड वो जो आप पॉइंट बोलो ना शुरू में, जो मैंने आई हैव टोल्ड द स्टोरी ना, कि डियर को हंट करता है, लॉइन हंट करता है. सो एवरी डियर नोज ना, लॉइन गोना हंट, स्टिल डियर गेट्स हंटेड. So this is the nature of the market moves on liquidity. उसको मतलब नहीं है कि वहां पे आपका एसएल था कि टारगेट था. उसको वहां पे दिखेगा देयर इज पूल ऑफ लिक्विडिटी देयर, इट विल गो. या तो तुरंत जाएगा या फिर धीरे धीरे जाएगा, बट वो जाएगा. Yes. Anurag, one question. Like the day before, like in the case I want to prepare for the next day. So, like first of all, like do we see hourly candle? Like if when I'm doing intraday, do I see hourly candles or I do see daily candles also for intraday? For intraday, I don't look into the daily candles. I mean, from this concept, I mostly either look 15 minute and 3 minute pair, and or I look for 5 minute and 1 minute pair. Okay, These so are you the only look at 15/3 wala combination if you are doing intraday. That is what is recommended, right? yes, 15 and 3 or 5 and 1. 15 और 3 में क्या होता है कि बहुत ट्रेड्स नहीं बनते इंडियन मार्केट्स में, उतने ट्रेड्स नहीं बनते. सो 5 and 1 में आई नॉर्मली शिफ्ट. बट आप जो बोल रहे हो वाला पॉइंट, डेली वाला पॉइंट, उसको मैं दूसरे कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज करता हूँ. एक्चुअली दिस इज वेरी डिटेल ये ना, तो फिर छोटे से सेशन में हो नहीं पाएगा. अदरवाइज वो प्रीवियस डे का हाई और लो आर आल्सो सम लिक्विडिटी पॉइंट, सो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं इस कॉन्सेप्ट में. Hmm. So do you put the stop losses in the system when you are doing option selling? When I do option selling, actually it is not very, I mean, it's not possible to calculate the option premium based upon the spot. But what I do, उस समय जो spot चल रहा था वही premium को डाल देता हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने ट्रेड का बताया, से मेरे को ट्रेड लेना है यहाँ पे, ये ट्रेड लेना है मेरे को यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है. एंड आई नो माई एस एल इज दिस. सो I'll keep my SL, I'll go to my put chart, sorry, call chart, और I'll see 1320 पे, 1320 की कैंडल पे 24 नवंबर को इसका हाई क्या था. I'll keep that SL. Yes, that makes the sense. हाँ, that is all. एंड वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट फिर वापस घूम के यहाँ पे आता भी है ना, तब भी वहां पे मेरा प्रीमियम कुछ ना कुछ डिके ही हो जाता है, तो फिर वो थोड़ा So like still you may be ending in the profit in the case market remains very sideways. yes. This concept is seriously very good. Only what challenge is like to identify the point of what it is. And इंड्यूसमेंट एंड ये लिक्विडिटी वाला पॉइंट. right, inducement, right? इंड्यूसमेंट भी आइडेंटिफाई ये कर देता है, इंडिकेटर इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई कर देता है. आपको बस इंड्यूसमेंट के पास में ढूंढना होता है फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है. Okay. इंड्यूसमेंट मार्क्स, ये देखो इंड्यूसमेंट, ये दिस इंड्यूसमेंट गेट्स मार्क्ड बाय द इंडिकेटर ओनली. दिस इज आईडीएम मींस इंड्यूसमेंट. Acha. And like and for the previous time frame, what we have done, what we have identified as a support zone or the reversal zone, वो ये नहीं बताता ना. For that we will have to manually mark that place, right? यस. आपको दोनों टाइम फ्रेम में इंडिविजुअली करना पड़ेगा.
सबसे पहले तो till the time there is no inducement sweep, we don't have to do anything. Once the inducement gets taken out, then only we shift to the lower time frame and we try to spot the fair value gaps near that. Okay. Okay, one more question, Anurag. Like, say we have all the setup done, but still the trade is not triggered because we haven't seen the breakout, right? Mhm. So, how many candles should we wait once the indicator has turned green? You hope you understood It what I want to ask, right? No, I could not get you. Can you please repeat? Acha, see, like we have marked one zone of the reversal, and then Yes. we have also marked the inducement, the fair Mhm. value gap as well. Okay. Mhm. But Mhm. now what we are waiting is for the candle to break that fair value gap for the Mm, entry. Should we be Actually, waiting for? I'll show I'll exam. I mean, I'll I'll repeat my that trading again. Say, I'll shift to 5 minutes. It was the point 24th November. 13th. See, at 12:50 on 24th November, you saw that it has swept the inducement and but the closing has not come above the inducement. ठीक है? So this was your first signal that Hmm. it has swept the inducement, but the closing has not come above it. So what you will do at this point of time, you will shift to the lower time frame. ठीक है? Now I will shift to the lower time frame from this point of time, and I will try to search for uh, in the lower time frame, the market will be bullish, but I have to take a bearish trade. So I will wait for the market to turn from bullish to bearish in the lower time frame. यहाँ पे हमें ये मिला, फेयर वैल्यू गैप मिला. So here we will take entry. So the price has to break the fair value gap, right? Price has to come For the again to entry. the fair value gap. Price has to come again to the fair value gap. Okay. तो ये पॉइंट पे था ना, यहाँ पे हमें इंड्यूसमेंट मिला था. अब हम 1 मिनट पे शिफ्ट कर जाएंगे. दिस वाज समथिंग आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ठीक है? हमें 24 नवंबर को 12:50 की कैंडल 12:55 पे बंद होती है, तो 12:55 पे तो हमें पता चलेगा कि ये इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है. ठीक है? अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे बियरिश है, ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे बुलिश हो रही होगी क्योंकि वो उसका पुल बैक है. हमें बियरिश ट्रेड बनानी है तो हम बियरिश ट्रेड कब बनाते हैं? पुल बैक पे बनाते हैं, राइट?
सो हम पुल बैक जो होगा, जो समय बेयरिश का पुल बैक चल रहा होगा, ये वाला पार्ट चल रहा होगा, ये छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश दिखना चाहिए। तो ये हमें छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश कैसे दिख रहा है? ये एक स्विंग था, ये स्विंग के बाद ये इसके ऊपर एक और स्विंग बन गया। तो अब हमें पता चल गया कि ये इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे ये बुलिश चल रहा है। अब छोटे टाइम फ्रेम को भी बुलिश से बियरिश जैसे ही होगा वैसे ही हम वो ट्रेड लेंगे। तो बुलिश से बियरिश के लिए हम क्या देखेंगे? छोटे टाइम फ्रेम पे जब ये अपना हाईएस्ट पॉइंट बना रहा था, तो उस टाइम पे लेफ्ट साइड का पहला स्विंग जो होता है वो इंड्यूसमेंट होता है। तो ये पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही इसको एक बड़े गैप के साथ तोड़ेगा या इसको तोड़ने के बाद बड़ा गैप क्रिएट करेगा, उस पॉइंट पे हम एंट्री ले लेंगे। सो ये गैप था, ये एक गैप था, 3 कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए। दिस वॉज द गैप, इट गेट्स टेकन आउट। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी? ये आपने गैप को मार्क कर लिया, ठीक है, ये गैप को मार्क कर लिया। अब ये गैप को तोड़ने के बाद प्राइस फिर से और नीचे चला गया, यू लीव इट। जैसे ही आप यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा लोगे इस जगह पे, अगर प्राइस यहाँ पे आएगा, आप शॉर्ट कर दोगे ट्रेड को। और ये बहुत लोग, मैं तो थोड़ा एग्रेसिव करता हूँ, आई डू इट वेरी एग्रेसिवली, दैट्स वाई मैं एकदम यहाँ पे ट्रेड लगा देता हूँ। देर आर 3 ways टू टेक ट्रेड्स हियर ऑल्सो। कुछ लोग यहाँ पे भी लगाते हैं, एकदम इसके मिड पॉइंट पे भी लगाते हैं, कि उसमें क्या होता है कि उनको कुछ ट्रेड्स मिलती हैं, कुछ नहीं भी मिलती हैं, बट इसमें ज्यादातर ट्रेड्स मिल जाती हैं अगर यहाँ पे लगाओगे। कुछ लोग यहाँ पे भी लगाते हैं, उनको और भी कम ट्रेड्स मिलती हैं, बट उनका रिस्क रिवॉर्ड और बेटर हो जाता है। अब उनके पास रिस्क इतना ही होता है, मेरा रिस्क बड़ा होता है, मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है रिस्क। आपका पूरा रिस्क हो गया, उनका आधा हो गया। हाँ, आधा हो गया उनका, बट उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई। नॉट एवरी टाइम मार्केट विल कम हियर। राइट। और सो जब खास आई करके जब एक्चुअल ब्रेकआउट आने वाला रहेगा तब तो वो उतना रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं हमारे लेवल्स को। यस 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 सर, सो इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स, कंफर्ट फैक्टर पे भी करता है। There are some players, again, you can do, if you're doing in multiple lot, you can also take, I mean, some partial entries here, then you can also take some entries here, so that way you will be guaranteed of at least some trades। अगर मार्केट यहाँ से भी लौट गया तो भी you will have something to gain। राइट। सो इन अ नटशेल, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई नो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, बट उसको अगर सिंपल कर सके, तो the first thing that you have to do is you have to form a bias on the based upon a higher time frame। So if you are looking for a 5 minute chart, then 5 minute pe if the structure is saying bullish, then you only have to find the bullish trading opportunities। Second point is that when the market, in 5 minutes is bullish, you have to wait for the inducement to happen. If there is an inducement sweep means if the market has taken the liquidity of inducement, but it has not closed below that inducement level, then we'll say that it is an inducement sweep. Once the inducement sweep happens, you shift from the higher time frame to the lower time frame, and in the lower time frame, if the structure in the higher time frame is bullish, then the whole in the lower time frame the structure should be bearish. And once in the lower time frame the structure turns from bearish to bullish, you take the trade on the fair value gap। Right. Can we also use something like to trail the stop losses based on like after one fair value gap, if we get another fair value gap, can we trail the stop loss to the another fair value gap in this strategy? No, I don't do that, because as I have told that I don't treat all the fair value gap as crucial. I only treat on those fair value gap as crucial which are formed near inducements, or a lower low or higher high. These kind of levels, if they are created, then only
I treat them, of some importance. But yeah, some people do that. It can be done. I mean, Anurag, there is question from Nilesh. Can you take on chat? okay. If position side is designed as per trade, fixed loss, then No, this yeah. I am saying your trade taking points will not make a difference if you have a per trade loss fixed. Then since Yes, you yes. have a better probability, taking trades, then you will have an extra edge. Yes. So this is the problem with all the price action kind of trading, that we cannot keep a fixed SL. So what we do, I mean what I do, since I trade in multiple lots, say if I have to take only 6,000 rupees loss and my SL is coming 20 points, so I'll open 4 lots. Correct. And if my SL is coming at 10 lot, then I'll open 8 lots. Correct. So that is the way I manage. So this is basically some hope the session has given you some idea of how smart money concept. It's a very deep concept. There are a lot of things also to be taken care of, but it is a very detailed concept. So maybe we can cover it in some future sessions. I'll just summarize the trading, because you know at the end of the day we track all these activities for trading. So I'll just summarize. So this is a higher time frame. Higher time frame is giving you a bullish structure, and there's this here there is an inducement sweep, and once this inducement sweep happens, this is the inducement sweep happens at this point of time, this structure will be appearing a bearish structure in your lower time frame. So it will be appearing like this. Sorry, my drawing is not that good. So since it is a bearish structure in the lower time frame, and यहाँ पे इसका जो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग होगा, that will be the inducement for a lower time frame. अब इस इंड्यूसमेंट को जब एक बड़े फेयर वैल्यू गैप से निकालेगा, उस गैप को मार्क करना है, और उस गैप पे जब वापस आएगा मार्केट, उस पर ट्रेड लेना है, और फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए जहां पे बड़ा टाइम फ्रेम आपको बोल रहा है, यानी 5 मिनट का टाइम फ्रेम बुलिश बोल रहा है, तो उसी डायरेक्शन में जाएगा. So this is how we take. And the beauty about this trade is that the SLs are normally very small. So anyway, if your SL gets hit, you don't have to worry a lot about it. So any further question? I think no, we can wind up Yeah. the call. Sorry, I was just one last question, right? There is this concept called as point of interest also, right? Yes. Point of interest. Yeah. So that would come where, between your fair value gap and your order block, or does it coincide? Point How of do we interest, detect actually, it's a terminology for ICT. Basically, it's a terminology. It is same like जहाँ पे भी आप अपना entry plan कर रहे हो ना, that is the point of interest. That is basically the point where smart money
players are accumulating their position. So you are also accumulating your position along with them. So, but in smart money concept, where would that come? Like that point of The interest? Would it be the same fair value investment? gap, fair value gap plus Okay. the order block. Okay. So these two coinciding will result in a point of interest, or the area between these two will be a point of interest? This entire zone will be point of interest, because normally in the real life there is nothing called a single point, a single price level where all the buying or selling happens. There are zones. For example, say Hmm. Nifty 26,000 to 26,020, probably that will be a selling zone. So that entire Hmm. zone is a point of interest. Hmm. Okay. Okay. Thanks, Anurag. Very good section. Again, Yeah, thank you so all for Anurag, like attending this session. we can take another session, like where we can go even deeper. And yeah, later, like as you mentioned that it cannot be covered in one session, entire thing. We can What have I'll one do, follow-up I'll session. share the indicator script in the group. You can Right. also have a look at it and practice it for this week. And if you have any question, follow-up questions, we can cover it in the next session. Perfect, perfect. Makes sense. Sure. ठीक है? All right. Thanks, चलो. Anurag. Thank you. Hey, thanks a lot, Anurag. Thanks, Anurag.